covering the various themes that have been asked in essay, and to gain marks there has to be depth in your essay. And what is being observed is there is a changing trend where more so-called, which you all call as philosophical essays, are asked. Now, when you say philosophical essays, what does that mean? Do you understand? Philosophical essays means right now they want to go into more abstract themes. Means they may be asking essay on the topics which they were asking previously, but they are testing your capacity to think like in abstract sense, means more higher level of thinking. And this is one such paper where again you put less efforts but you get more returns, and whatever content that we give helps you in not just this will improve the essay skill otherwise also. So those who are new, they know the pattern. The pattern is in UPSC there are two sections and you have to write two essays of around how many words? 1200 words, and you can choose from either of the section. Section A is more philosophical. Section B is comparatively easy, and there are some common themes like environment, gender, then the themes on science, education. So here we will do practice how to think. So today I have taken the theme of science. I'll tell you which type of questions are being asked. See, let's have a look on the previous year questions. Polity and governance, right now we are not thinking, so we ignore karte, because today I have thought I will start with the topic of science. Fine. And see the trend. Let us see, like in science, normally people feel that, or people assume that you finish your general studies and then you do essay, but there is no connection, because they are not asking such type of questions also, where if you can write, you can write even without understanding what is there in general studies that you will be really requiring to write an essay on science and technology section. Actually nothing. Okay, so let us understand the trend and we will try one question. So 2002, the question was modern technological education and human values. That how human values are being impacted, because we are living in the virtual world, technology and human values. Still, there is something of philosophical in nature. Do you think for modern technology, education and human values as an essay you need to finish GS? What will you do with that? Okay. Is spirituality and scientific temper? It's a good topic. Is spirituality and the scientific temper? Is spirituality and scientific temper go hand in hand? Yes or no? Or they are opposite? Hand in hand?
It depends how you think on this. It depends how you deconstruct. Increasing computerization would lead to the creation of dehumanized society. Fine. So, what GS completion is required? Required. Fine. Dehumanized society. Who talks about dehumanized society? If you are political science student, have you heard about dehumanization? A very famous concept of Karl Marx known as alienation. Dehumanization means alienation. Fine. So, increasing computerization would lead to creation of dehumanized society. Now they can exchange it for increasing AI would lead to dehumanized society. Now here the question you have to discuss more on technology or AI or dehumanized society. What should be the core theme? How will you open the question? Question, will you write more on this part or this part? Which is a bigger concern? Which is a cause and which is an effect? Effect is dehumanized. So where you have to think more on dehumanized society. Okay. Now again, trend. Science and mysticism, are they compatible? Science and spirituality can be compatible, but science and mysticism may not be compatible. So they are asking question from philosophy of science, not from science and technological developments. Again, science and technology is a panacea for growth and security of a nation. So that was in 2013. Now these type of questions are less expected, and these type of questions are expected because what is essay? Essay has some personal touch. Fine, your thinking. Essay is not extended general studies. Technology cannot replace manpower. Okay? Can technology replace manpower? It depends. Like AI, AI can replace manpower, but not completely, because after all it is creation of man, but it's a big challenge. And right now AI is a major theme, whether you study international politics, you study sociology, everywhere. Cyberspace and internet, blessing or curse to the human civilization in the long term. Rise of AI, the threat of a jobless future or a better job opportunities through reskilling or upskilling. So they want to know your attitude. The process of self-discovery has now been technologically outsourced. What does this mean? Process of self-discovery is now technologically outsourced. In what way it is technologically outsourced? Self-discovery. Who you are. How do you get to know? Through data. Technologically outsourced. You have become a data. Fine. What is research but a blind date with knowledge? And the doubter is a true man of science. This was an essay in 2024. Fine. So, do you think you can write, if essay is asked on this topic, the doubter
is a true man of science? Are you getting an idea how to write an essay on this? How to open up the essay? So let us take this topic itself. The doubter is a true man of science. And in essay, you can be more open-ended in your answer. It all depends how they want to know you. So that is why I always say it is a more connected with your interview. Fine, it's a personality test. How you are going to interpret, how you will interpret will depend upon your background, your understanding. Fine. So now the question is, the doubter is the true man of science. Now, to be able to write this essay, from where should you start? This essay is giving importance to which issue? First, deconstruct the essay. Doubter is the true man of science. This essay is giving importance to what? How will you plan this out? Is this statement giving importance to science? Science? Fine. So the key is you have to write about science. Fine. And essay is tilted towards science. Means benefits of science. Who can be a true man of science? The essence is we want to show that science is important and we need people who can really contribute to the science. Fine. So what is science? How science develops? And first of all, your essay has to be explaining that you understand importance of science. Fine. Now, when you understand importance of science, you should also be in a position to define what is science. Fine. So, what is science? What is the concept behind science? And understanding the concept is, after all, doing philosophy. Okay. And doubter is the true man of science. Who is the father of modern science? Who is the father of modern science? With whom modern science starts? You know the man of science. You know some man of science. Name them. Some men of science writing answer on science topic will give you lot many marks, because normally people will not write. Fine. And even if they will write, they will not write in a proper context. So now you know the man of science. Name them. Einstein. Yeah.
Stephen Hawkins. What else? What? Newton. Newton doubted something. Who doubted? Somebody who will put the doubts. And if you will doubt the authority, you are going to be punished. Fine. So, the doubter, Copernicus, Galileo, they are the doubters of science, the true man of science. And then they are actually scientists. Fine, they are the scientists. But then there are many people who are philosophers of science, who have given the concept of science. And essay paper should not be written like a general studies, because they give you time. You are not in essay, you are not leaping in dark. Everybody knows these are certain themes you should be preparing, and you should have some quality thing to say. Your own opinion should be based on some understanding. So, philosophers of science who have given the theories of science. So, among the philosophers of science, maybe in your ethics you may be studying the philosophers of science, two important philosophers who are considered as philosopher of science. One is David Hume. David Hume is also a doubter. He has also doubted. And another person is a big doubter, and that is Descartes. All these you also study in political science. Descartes. Descartes' famous statement is, I think, therefore I am. You can get an essay on this also. I think, therefore I am. And there are so many other philosophers of science. Was Marx a philosopher of science? At least he claimed himself to be scientific. But among the philosophers of science, you can talk about Karl Popper, concept of falsification. Philosophers of science, Thomas Kuhn, structure of scientific revolution. Philosophers of science, Einstein. Nothing is without philosophy. Einstein is also philosopher of science. So there are so many philosophers of science. But was Marx doing science? Was Marx doing science? Was Marx scientist? No. Fine. Was Hitler doing science? His theory of racialism was science? No. Fine. So, science has also been not free from ideology. Science has also been used for ideological project. So everything is not good about science. Okay. So you should know the prominent people. There are certain scientists who are writers who have written on science, and this particular statement
is from the Nobel Prize winner Feynman. Feynman has written a lot of essays on science and he himself is from science. Fine. So now let us open up this essay again, that so science is doubt, doubting something, excuse me, putting a question mark on something. What is opposite of science? Religion. Religion means superstition. Superstition means age of darkness. Age of darkness means you are treating humans under the influence of some supernatural power. Okay, so once you see the topic, try to gather the ideas, but at the same time also have some content. Okay, so science and how science is seen by the people, is the science is there is a real science, is the science that is being done now is really liberating. What has been the purpose of science? To liberate human, but today science wants to control humans. Fine. So how science has changed? So doubter is not just a man of science. The stage at which science is today also needs to be doubted. Is science really doing science, or science is being converted into something else? So if you are political science student, do you know some people or some school of thought where science has been criticized? Postmodernism, science has been criticized. Critical school criticizes science. So science has also lead to domination and different forms of domination. Always give impression in your answer to the examiner that you have read, you have prepared, you are well informed, there is some standard sub basis, and like the essay should be a classic written by you. Fine. Essay should put you a class apart from the others. It should not be uh, like just memorization of facts. Means essay is one paper where quality will matter more than quantity. Okay. And since you are political science students normally, so you know most of them. Fine. And utilize it. Okay, and it's not that political science has a monopoly over these thinkers. They're common thinkers discussed everywhere, and as a subject, pol science and philosophy are very interconnected. So if I have to open up this answer question, the doubter is the true man of science. Now let us see what can we think about science. तो फर्स्ट थीम तो हमको ये स्ट्रक्चर करना है दैट योर आंसर शुड बी टेलिंग द importance of science, the benefit science has brought, and how today science is a part and parcel of our life. Each time, like this board is a science, this AC is a science, there is a science.
So we are living in the age of science. So first theme should be, you need to think the benefits of science. Okay. Now philosophy means going to basics, and you should be systematically representing your ideas. Fine. So now, while explaining the benefits of science, we should also know what is science. What is science? What is? तो पहले स्ट्रक्चर में पॉइंट्स सोचिए कि किस किस पॉइंट्स को हम इलेबोरेट करेंगे. तो पहले तो हम बेनिफिट्स ऑफ साइंस को इलेबोरेट करेंगे. सेकेंड चीज हम किस पर इलेबोरेट करेंगे? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? Epistemology is science? No. Epistemology is a branch of philosophy. Is philosophy science? No. Is philosophy science? Is physics science? But you can say yes or no only when you have concept of science. You have definition of science. So what is science? Systematic study is science. Only systematic study doesn't make things science. This is a good point. So how do you do philosophy? First of all, you should be telling next point में paragraph में what is science, या हम नेक्स्ट पैराग्राफ में हमेशा डिफाइन करें साइंस. ओके. तो जब हम डिफाइन करते हैं तो दो तरीके से फिलॉसफी में डिफाइन किया जाता है. रिमेंबर एरिस्टोटल गिविंग द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप. तो एरिस्टोटल फर्स्ट टेल हु आर नॉट सिटीजन्स, देन टेल्स हु आर सिटीजन्स. So whenever you define any concept, let us say courage, then first say this is not courage. Fine, this is courage. तो दो एंगल पे आप सोच सकते हैं to define any concept, what it is not and what it is. Fine. So just like he said, systematic study is science. But I don't think that is science. Anything systematic doesn't mean science. So you have to show the depth of science. So this is a very, very superficial, very raw definition of science. This is not science. Fine. Anything systematic is not science. It can be one of the property of science, but that's not science. So what is science for you? Are you a science student? Physics student? Chemistry? You are a science student. What is science? When will you call something as science? Organized and systematic is same, which is based on logic. Okay. So something is happening. For example, apple was falling on the ground and people were looking at it, but nobody earlier than Newton told why it is happening, what is the logic behind. So gravity was a part of science then or not? Huh? It was a part of science. And is philosophy also science? And who is the first person to write a book on physics? You know that? Aristotle. Aristotle wrote on physics and he wrote on metaphysics. And his physics and metaphysics both are there in his theory of four causes. So in a way,
the first scientist can be Aristotle. He is known as father of political science. Okay, and Aristotle used to say that if two things like one light and one heavy, one light thing and one heavy thing, if you will throw from the same time with the same height, which will reach to the ground first? Heavy will reach? Sure? Heavy will reach? Engineer साहब बताएं. Same time. How can you say heavy will reach? ठीक है, because the same acceleration force apply. And there was a time when everybody was believing in what Aristotle was saying, and people used it as a common sense. But it was never like that. Means Aristotle's science was not so much based on empiricism. It was based on certain assumptions. So the first person to doubt Aristotle was actually Galileo. And Galileo has experimented from the Tower of Pisa, and he has thrown two balls, one is small and one big and heavy, and he has shown that both the balls are reaching to the earth at the same to the ground at the same time. And then Newton was bigger than Galileo because Newton could give actual reason, and Newton could also give measurement, the acceleration at which that ball will reach. So still it means there is a evolution in science. Fine. So science from assumptions to science to verification. From verification, science again moved in the direction of further, like experimentation, quantification, then again falsification. So doubter is a man of science because falsification is now the definition of science. And who gave this definition? Karl Popper. So Karl Popper said that your theory qualifies to be a science only when you are open for proving it wrong. And the moment some scientists started doing what the people of religion were also doing. So first of all, when will you call something as science? So normally, in order to define, either you can go for the epistemological origin of something, कि उस term का origin क्या है, fine, या you can also give an answer on the basis of common sense. तो एक pattern follow करो, what is not, is this honesty? No. Is this honesty? No. Is this honesty? No. Then एलिमिनेशन करके भी आप उसकी डेफिनेशन पे पहुंचते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंस. फाइन. तो व्हाट इज साइंस में वी विल गो फॉर एटिमोलॉजिकल origin of science. In essay you have to show that how you start from the very basic things. Okay, बिल्कुल हम बेस में चले जाते हैं, और बेस ये होता है जिसके बाद कुछ ना हो, यानी उस क्वेश्चन के बाद और कोई क्वेश्चन ना उठे, दैट इज अ बेस. ओके, सो एटिमोलॉजिकल, द एटिमोलॉजिकल origin of science
एटिमोलॉजिकल वर्ड कैसे बना? एटिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ साइंस इज इन द वर्ड एपिस्टीम. And what is episteme? Knowledge. So what is science? What is science? Science क्या है? Knowledge है. What is knowledge? Which knowledge is knowledge for you? What is your definition? This is what essay demands. You should be able to define आप किस knowledge को knowledge मानेंगे? Which knowledge is knowledge for you? True knowledge. What is that? वर्ड से थोड़ी होगा, आप डिफाइन करें. व्हाट इज ट्रू नॉलेज फॉर यू? विच नॉलेज विल यू कंसीडर एज नॉलेज? ओके, समथिंग इज लॉजिकल, but everything logical may not be empirically verifiable. It is logical that if you do good, you will also get good. But in real, it is logical that if you are honest, you will have good life. But in reality, it doesn't appear so. So will you believe in this dictum that it is good to be honest? Or there will be a doubt on that maybe because of honesty I may have to suffer. So which knowledge is knowledge? When you feel you have a knowledge, when there is no scope for doubt. ठीक है? नॉलेज का मतलब है ट्रस्ट, फेथ, बेसिकली रिलायबिलिटी. एक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए टू कंसीडर समथिंग एज नॉलेज इज reliability, trustworthiness. If any theory is reliable, if any theory is trustworthy, that is knowledge. ठीक है? तो ऐसे ही origin of knowledge start हुआ, और जो trustworthy है, reliable है. What is your definition of science? Reliability. ठीक है? जिसके ऊपर आप रिलाई कर सके. ठीक है? जैसे साइंस ऑफ एरोडायनेमिक्स आप रिलाई करते हैं ना. साइंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन आप रिलाई करते हैं कि वी विल हैव मिसाइल इन केस ऑफ अटैक, वी विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड. लोग रिलाई करके मून पे चले गए. ठीक है? तो साइंस इज ऑल अबाउट समथिंग ऑन विच यू कैन रिलाई. साइंस के लिए साइंस शब्द ही नहीं यूज करते हैं. साइंस शब्द का मतलब हुआ नॉलेज. ठीक है? साइंस इज नॉलेज. ओके, इज इट ओके? तो अभी आप फिलोसोफर्स की तरह बातें करें ना, साइंस को साइंस ही बातें ना करें, घुमाने वाली बातें करें. ठीक है? एक नेक्स्ट लेवल पे जाके बात करें. तो साइंस का बेसिक मतलब है नॉलेज, एंड देयर आर डिफरेंट systems of knowledge. Which is most privileged today? भाई आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, घर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? बीएससी वाले की. तो सबसे प्रिविलेज्ड कौन है? साइंस है. साइंस की खास बात क्या है? द मेथड ऑफ साइंस. तो हम क्या
कॉमर्स को साइंस बोल रहे हैं? क्या आज हम फिलॉसफी को साइंस बोल रहे हैं? नहीं, हम कुछ डिसिप्लिन्स को साइंस बोल रहे हैं, और वो डिसिप्लिन्स जो थ्योरी को वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफिएबिलिटी, ठीक है। आप एरोडायनेमिक्स को तो साइंस बोल रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी आप साइंस बोल रहे हैं, तभी तो आप बैठ रहे हैं ट्रेन पे। इज दैट क्लियर? तो पुष्पक विमान पे बैठेंगे? ठीक है, नहीं बैठेंगे, लेकिन बोइंग पे बैठ जाएंगे, है ना? तो क्यों? ट्रस्ट है आप। तो आज साइंस मीन्स रिलायबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is your criteria of reliability? What will you rely on? Will you rely on something which your senses do not permit, or you believe that senses can also give you illusion? तो फिलोसफिकल ऐसे करने के लिए क्या करना होता है? उस चीज में घुसते जाओ और क्वेश्चंस बनाते जाओ और उसके आंसर्स देते चले जाओ। पहले आप एक क्राइटेरिया बनाएंगे, मान लो अब ये ऐसे होता, तो हम सबसे पहले क्या लिखते? इफ आई विल बी प्रिपेयर्ड, you should always be prepared with one science based essay. In the end, when you will get the content, you will get certain poetries on science. Fine. So those poetries, one or two poetry you can always remember. अभी हम उस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो I will start because I am trying to find out the true man of science, because I am a fan of science. I believe science has done wonders. तो फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट लिखो ऐसे, देखो, प्रेजेंट एज is an age of science. Full stop. Today, science is one of the most privileged among the systems of knowledge. Full stop. The development of science has brought remarkable transformations in the quality of life. Right? Science has given us tools to conquer nature. Right? Science has liberated man from the fear of supernatural oblique superstitions. और superstitions. Liberation है. Science is enlightenment. Science is liberation. Emancipation का रूट है साइंस, ठीक है? तो इसको अब आप अपने इमेजिनेशन से और बढ़ा सकते हैं. जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, बट बी बैलेंस्ड इन योर अप्रोच. There is nothing which will have only positive. Fine. So, but in case of negative and positive, maybe we recognize
Maybe there is lot more negative in science, but common sense based understanding is good is more, and that is that. ठीक है, तो try to be humble and right to balance the thing. ठीक है, तो अब हम next क्या लिखेंगे? Clue में I will balance my view on science. Okay, so I should be a rational person looking at science. So what I will say, that though science has done immense benefits for humans, immense benefits for human life, but science also has certain darker elements. Okay. What are some negative themes associated with science? Why, if you have to criticize science, why will you criticize science? Give me some reasons. ऐसे लिख सकते हैं. For example, science has invented the weapons of mass destruction. Next, science has led to the growth of technology, industrialization, and today we are facing problems like pollution, climate change. Next, ये तो consequences होते हैं और किसी भी चीज की एक अंडरलाइंग फिलॉसफी होती है. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं above all science has promoted which value? Materialism. And we have seen the negative consequences of excessive materialism. Now you have to pause and you show that you think on all lines. Don't take it so simply कि हमने साइंस की कुछ अच्छाई बता दी और साइंस की कुछ बुराई बता दी, तो ये तो सब करेंगे. अब सबका सिलेक्शन नहीं, सबका एलिमिनेशन करवाना है, खुद का सिलेक्शन करवाना है. तो कुछ अलग थिंकिंग दिखाइए. क्या दिखाएंगे आप अलग थिंकिंग? अभी नहीं, पीपीटी बहुत है, बता दे बाद में. बताओ, क्या ऊपर जितना हमने डिस्क्रिप्शन किया, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? अप्लाई योर माइंड. हमने क्या किया? साइंस की अच्छाई बता दी और साइंस की बुराई बता दी. आप किसके साथ हैं? अच्छाई के साथ कि साइंस की बुराई? आप साइंस चूज करेंगे या साइंस को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे. अच्छाई ही तो ज्यादा है. लेकिन आप ये बताइए, the problems or the negative things of science which I gave you, is it problem of science or problem of humans? Humans. ठीक है, तो पॉज दीजिए. मेक योर क्वेश्चन राइटिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज आंसर तो साइंस के फेवर में टिल्टेड है आपका टॉपिक. ठीक है,
अब लिखो ऐसे, लिखो वाइल, ऐसे लिखो और कनेक्टिंग लाइंस लिखिए, ठीक है। वाइल एनालाइजिंग द नेगेटिव एंड the positive consequences of the science, it is essential to rethink on the negative consequences. देखो some pertinent, pertinent, some pertinent questions arise. First is whether science is to be blamed or something else. ठीक है. Next, whether these consequences are, जैसे ये सब चीजें दिखाओ कि जब हम सोचते हैं तो दिमाग में क्वेश्चंस, आप जो माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं आप पेपर में लिखिए, ठीक है. उनको ऐसे इंसान चाहिए जो बहुत सोचता हो, ठीक है. तो क्या क्वेश्चंस आप रेज कर रहे हैं आप उसको लिखिए, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये साइंस को दोष दें या इंसान को दोष दें, ठीक है. तो क्या लिखा था फर्स्ट, टू बी ब्लेम्ड. और नेक्स्ट, if science, next लिखो, if science is knowledge, can knowledge be vice, 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 क्या नॉलेज बुराई हो सकती, ठीक है. कॉमा, एज, vice, वाइस, वर्च्यू का अपोजिट, एज द फेमस philosopher Socrates gave the maxim, 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 knowledge is virtue. Why I have used the term maxim? Pardon? Yes. Maxim means this thing is regarded as a true itself. तो words का selection, okay, वो show करता है कि how careful you are. You are a different type of a person. There is a selection everywhere. तुम्हारा एक क्लास है, तो साइंस का रूल भी लिख सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऐसे जो भी आपको ऐसे कीवर्ड्स लिखते हैं, पर्टिनेंट, मैक्सिम, ये सब लिख के इसकी लिस्ट बनाते रहो, ठीक है. तो द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है. एंड इन ऐसे यू शुड हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड यू कैन से दैट I, or it can be taken that knowledge cannot be a source of vice, and knowledge is virtue in itself, and therefore if these are the problems, it has nothing to do with the science, it is to do with humans or some other things, ठीक है. अब ये इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमको बस इसको ओपन अप कर देना है, ठीक है. तो अब कह सकते हैं, राइट, इट वुड, ऐसे लिखो, इट वुड बी मोर
appropriate to believe that science is not to be blamed for the so-called negative consequences rather blame lies somewhere else. What is that somewhere else? Where is the blame? ठीक है, somewhere else लिखो, right? That is failure of humans to control their passions or to utilize knowledge to fulfill the evil designs. बट हमने थोड़ा साइंस को बस जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब लिखो, अब हम नेक्स्ट में साइंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। कई तरीके हो सकते हैं, व्हाट इट इज नॉट, जैसे ये लोग कह रहे हैं हमेशा जैसे कोई भी आर्ग्यूमेंट करे तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए उस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानना, ठीक है, तभी नॉलेज आगे बढ़ती है, ठीक है। डाउटर इज द मैन ऑफ साइंस एंड साइंस इज अ ट्रू नॉलेज। तो लाइफ का नॉलेज का रूल ये है, कीप ऑन डाउटिंग and never accept anybody's argument. Go for argumentations, but go for logical argumentations, because there is a layers and layers, and then only you can understand the truth. तो आपको लॉजिकल होने के लिए किसी ने कह दिया और आपने खुद से कह दिया कि मुझे पता है साइंस की, मैं तो सिस्टमेटिक नॉलेज की डेफिनेशन के साथ आगे चला जाऊंगा, नहीं, आपको उसको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं, सब साइंस है आपको तो कैसे, यही तो ऐसे की खास बात है, आपके पास बहुत लिबर्टी है, ठीक है। जैसे जीएस के आंसर क्लोज्ड है, उतने में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत लिबर्टी, आप कैसे लिखें, लेकिन कचरा ना लिखें। ऐसे में जैसे ही कचरा, घटिया, एस्टल पेस्टल लिखना चालू करते हो ना, उस इंसान का स्तर ही खराब लगने लगता है, वो सब ना लिखो, बातें करो। आपको, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन नोइंग पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द साइंस, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स यू शुड नो। और फिर हर साल जब पूछा ही जा रहा है तो ये तो एक प्रोबेबल टॉपिक है, उस पर भी प्रिपरेशन नहीं किया और खुद को प्लेटो समझ के क्लास में सीधे ही लिखेंगे पेपर में, ऐसे थोड़ी, ठीक है। तो प्लेटो तो बन जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनोगे। एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटाइजेशन एंड मेनी अदर थिंग्स। तो अब हम नेक्स्ट, हमेशा एनीथिंग कम्स ट्राई टू डिफाइन इट, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, लिखो बिफोर starting our journey to understand who is a true man of science, we must first define what is science, ठीक है।
व्हाट इज साइंस, इसको लेना है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, लिखो वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी by understanding the etymological origin of the term science. Etymological, ETYMO, etymological origin of the term science. ठीक है, तो लिखते हैं the term science comes from the Greek word episteme, and write episteme denotes knowledge. ठीक है, now why are we discussing science? Science is knowledge. Then why are we discussing knowledge? तो हमेशा ऐसे में क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाओ। ठीक है, जब एक क्वेश्चन का आंसर देके आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आप डेप्थ में चल के आगे चले जाते हैं। तो हम तब से बता रहे हैं डाउटर इज अ मैन ऑफ साइंस। साइंस क्या है? नॉलेज। तो भाई नॉलेज का भी इंपॉर्टेंस हमें पता है क्या? ठीक है, तो एक पैराग्राफ आपको लिखना चाहिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ में नॉलेज का सिग्निफिकेंस, व्हाई सच question is so important. What exactly is science? Every knowledge, I am not going to take science, but what is the importance of knowledge in human life? What is the importance of knowledge? साइंस क्यों चाहिए? साइंस मतलब नॉलेज। नॉलेज के ऊपर ही तो हम ऐसे लिख रहे हैं। तो नॉलेज पे ऐसे लिख रहे हैं तो हमें क्या उसका इंपॉर्टेंस पता है? क्यों नॉलेज चाहिए? हाँ, knowledge is essential for good life. Then what is good life? What is good life? A happy life. What is happy life? Where you do not, यही है फिलॉसफी। क्वेश्चन के क्वेश्चन करते चले जाओ, अपने आप आंसर मिलते रहेंगे। आपके लिए अच्छी जिंदगी क्या है? भाई अच्छी जिंदगी है आपकी एक हेल्दी लाइफ, यू डोंट डाई अनटाइमली डेथ। ठीक है, तो भाई आप ऐसे एरोप्लेन में बैठे हैं जहां पर सेफली पहुंचने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रस्ट करोगे उसको, तो कैन इज देयर एनीथिंग इन ह्यूमन लाइफ विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉलेज? कैन वी ईट एनीथिंग? कैन वी ड्रिंक एनीथिंग? नो ना। तो नॉलेज को का इंपॉर्टेंस, ये एक और मंगा दो, क्या नाम है, राम जी, ये एक और रखा होगा जरा, वो टेप है ना। तो अब ये बताइए, नॉलेज का आप पर्सनल टच के साथ बताइए ना, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज फॉर यू? कैन यू थिंक अ मोमेंट ऑफ योर लाइफ वेयर यू लीड विदाउट नॉलेज? डू यू स्लीप विदाउट नॉलेज? व्हेन वी स्लीप, घर वाले बोलेंगे नॉर्थ में सिर रखो, साउथ में पैर रखो। सोने भी तो नहीं देंगे यार बिना समझे कि सोने देंगे। ठीक है, तो जानकारी। तो भाई इस टॉपिक पर ऐसे लिखा जा रहा है तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसे साइंस से ज्यादा नॉलेज पर है। और नॉलेज कैसे बढ़ती है? डाउट से। डाउट से जब आप नॉलेज को ले जाते हैं तब आप
एग्जिस्टिंग चीजों को चैलेंज करते हैं और नया ले जाते हैं। गैलीलियो ने नहीं चैलेंज किया होता, कोपरनिकस ने जियोसेंट्रिक वर्ल्ड को नहीं चैलेंज किया होता, तो प्रोग्रेस कैसे होती? तो नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, हम ऐसे में टाइम लगा ही क्यों रहे हैं इस पर? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन आवर लाइफ? Actually, as a human, we cannot live. Forget human. Can machine live without learning? So today, you have machine learning. Machine also needs to learn now, not just human. Human life is inconceivable without knowledge. Why? Because it is natural for humans to know. Because intellectual curiosity is implanted in humans. So we cannot think of life without knowledge. And they are very unfortunate people who do not get opportunity to learn. Can you just imagine? You have to empathize with them. There have been people for generations who have been deprived from this very human thing. It means if we have deprived certain people, certain castes from knowledge, we have compelled them to live like animals. So try to show your systematic thinking, your empathy, your value system in your, if you'll go, the essay is a personality test. See the personality traits. What personality traits of an administrator? You should be able to empathize on all these things. So understand the value. जब आप education की value समझेंगे, तभी जाके तो आप education के लिए कुछ करेंगे। तो अब हम knowledge का importance, next point हमारा क्या होगा? Importance of knowledge. ठीक है? क्या है importance of knowledge? लिखो। अब I am just giving you thinking, you need to think. आपको सोचना पड़ेगा तभी लिखना आएगा। हम तो अपनी बात कह रहे हैं, आप हमसे डिबेट कर सकते हैं कि नहीं नहीं ह्यूमंस को नॉलेज की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे भी जी सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इज इट लाइफ वर्क? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के खुद के दिल से लिखिए, दिमाग से, दिल से हमेशा लिखिएगा, हमेशा अच्छे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखो, ऐसे लिखो, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब लिखो, नॉलेज इज a very integral part of what? किस चीज का अभिन्न अंग है? किस चीज का? आपके जीवन, हमें तो नहीं लगता तुम लोग पढ़ते लिखते, इसलिए बता नहीं पा रहे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, लेकिन हम अब इसके लिए बेटर वर्ड यूज किया करेंगे, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो नॉलेज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखो, इफ एनी ह्यूमन is systematically deprived from the opportunity to gain knowledge, अपने पर्सपेक्टिव दिखाइए उस पे, it can be treated as one of the worst form of क्या? Human rights violation. Question of education and good life is linked, na? Worst form of human rights violation.
ठीक है, अब लिखो नॉलेज, लिखो वी कैन नॉट कंसीव, फॉरगेट गुड लाइफ। आप कह रहे हैं नॉलेज क्यों चाहिए गुड लाइफ, बट क्या लाइफ बिना नॉलेज के हो सकती? गुड लाइफ तो सेकेंड है, उसको और वेटेज दो। ठीक है, वी कैन नॉट कंसीव ह्यूमन लाइफ ऑब्लिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस विदाउट नॉलेज, फॉरगेट गुड लाइफ। ठीक है, अब देखो ह्यूमंस डिफर फ्रॉम अदर स्पीसीज because of the presence of what reason? You can write a better word, logos, logos लिख दीजिए, रीजन भी ठीक है, रीजन ऑब्लिक लोगोस, ग्रीक वर्ड है, LOGOS, लोगोस, लोगोस। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, अब हम फिर साइंस से नेक्स्ट पॉइंट पर आई विल अगेन कम बैक टू द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। ठीक है, देखो वंस वी अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नॉलेज, we also need to address a secondary but not less important question। अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे आप? मैंने बता दिया नॉलेज चाहिए जिंदगी के लिए, और अच्छी जिंदगी के लिए और ज्यादा चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? विच नॉलेज। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट? अ सेकेंडरी, येट, जब भी हम सेकेंडरी लिखते हैं बट फिर भी लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी ये सब स्टाइल है लिखने का, येट नॉट लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज। ठीक है, फिर क्वेश्चन रेस करो, वेदर एनी नॉलेज इज नॉलेज। नेक्स्ट, व्हाट विल बी the criteria to accept knowledge as knowledge oblique science। फिर और क्वेश्चन देखो, देखो वेदर इट विल बी इनफ, जितना क्वेश्चन सोचेंगे उतना ही आपकी फिलॉसफी स्ट्रांग हो जाएगी। वेदर इट विल बी इनफ टू ट्रीट something as knowledge if it is not testable or verifiable। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, अब अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखो। ठीक है, लिखो एट द मोस्ट जनरल लेवल द क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज हैज टू बी
reliability. ठीक है, तो वी शुड रिलायबल. अब हम कहेंगे hence out of the different streams of knowledge, science has the privileged position because it comes nearest to the criteria of reliability. ठीक है, अब एक कॉमन सेंस है, डॉक्टर में ऑल्सो गो रॉन्ग एंड पंडित में ऑल्सो गो रॉन्ग. उसका दोनों का प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी जान किसके हवाले करोगे? डॉक्टर के हवाले करोगे. यही तो क्राइटेरिया साइंस की लेजिटिमेसी है, एज ऑफ साइंस है और वैलिडेशन है उस नॉलेज का. ठीक है, अब हम जिस सेंस में वर्ड्स हैव अ लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, तो क्या जिसे हम आज साइंस कहते हैं क्या उसे ही साइंस कहा जाता था? जो अपना क्वेश्चन है वो फिलॉसफी की तरफ नहीं है, ये साइंस की तरफ ही है. ये क्वेश्चन नेचुरल साइंस की ही तरफ है थोड़ा क्वेश्चन. तो हमेशा एक डायमेंशन ये होता है कि हम उस शब्द की मीनिंग को क्लियर करें. तो क्या द वे वी आर यूजिंग द टर्म साइंस इज द सिमिलर वे और इज देयर आ इवोल्यूशन इनटू दैट? ठीक है, तो सेकेंड अब हम किस चीज पे लिखेंगे? इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एज अंडरस्टूड टुडे. क्योंकि हम बिल्कुल ये क्लियर कर लें, जब हम डाउटर इज द साइंस है तो हम किस चीज को लेके चल रहे हैं? आप फिलॉसफी को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन सिंपल मीनिंग यही होगा कि आप नेचुरल साइंस को लेके चलते हैं. ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं राइट राइट दो टुडे when we use the term science, it means the natural sciences, but this was not the way the term science was used from the beginning. ठीक है, अब लिखो to begin with the term science was used for philosophy. ठीक है, फिलोसफी. अब हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते. ठीक है, तो इट वाज यूज्ड फॉर फिलोसफी. अब लिखो फिलोसफी वाज सीन टू बी मोर रिलायबल देन previously held mythological explanations. होमर, इलियड, पहले माइथोलॉजी स्टार्ट, माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. ठीक है,
अब नेक्स्ट लिखते हैं ग्रेजुअली द जर्नी ऑफ द टर्म philosophy as a science met a huge downfall when the age of philosophy was replaced by the age of religion oblique superstitions known as dark ages. अब नेक्स्ट लिखो राइट द इंटीग्रल component या integral element of intellectual curiosity and the search for good life took people towards challenging the conventional notions based on religious text को क्या कहते हैं scriptures based on scriptures for example so called biblical Bible वाले biblical explanations of the causes of sorrow for humans in the original sin failed to satisfy the persons of intellect. Who are these persons? Name them. Like John Locke, persons of intellect. क्या? मार्टिन लूथर किंग. बट वो थोड़ा रिलीजन में जा रहे हैं, हम लोग फिलोसफी और साइंस में चले जाए. आपको लिखना है, आप लिख सकते. ठीक है. ग्रेट इंटेलेक्ट लाइक जॉन लॉक, कॉमा इमैनुअल कांट, which established the centrality of humans that is revival of ऐसा कोई स्टेटमेंट फिलोसफी में जो ह्यूमंस को सेंटर पे रखता है, आपको पता है? रिवाइवल ऑफ द आइडियाज, ऐसे लिखो द डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोटागोरस, द डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोटागोरस, that is man is measure of everything. Man is measure of everything. ह्यूमैनिज्म से ही तो साइंस आया है और आपने चैलेंज किया चर्च को. मैन इज मेजर ऑफ एवरीथिंग. अब लिखो द एनवायरमेंट ऑफ रेनेसॉन्स
created conditions for humans to challenge the tradition and in the quest for reliability of the knowledge, the idea of science itself has been subjected to various criteria. ठीक है, अब लिखो if initially the criteria was logic, the next criteria became verification. Verification. अब लिखो thus began science in the form of, साइंस के भी फॉर्म्स हैं, साइंस इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, जो सामने है हम उसी को मानते हैं। तो ऑगस्ट कॉमटॉम्ट का साइंस वो पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म से और वो जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उससे भी चेंज होता चला जाएगा रिलेटिविटी में, और न्यू फिलॉसफी ऑफ साइंस, वेरिफिकेशन से फॉल्सिफिकेशन की तरफ हम चले जाएंगे, पोस्ट मॉडर्न आइडिया ऑफ साइंस आ जाएगा। तो ये मॉडर्निस्ट आइडिया ऑफ साइंस है, वेरिफिकेशन। पहले लॉजिक, पहले तो बिल्कुल ही साइंस से कम उम्मीद थी, सिस्टमेटिक, अब इसके बाद सिस्टमेटिक और लॉजिकल एक ही चीज है, लेकिन अब हम वेरिफिकेशन पे चले गए, और साइंस एज अ कॉन्सेप्ट हैज ऑल्सो बीन इवॉल्व। ठीक है, तो अब लिखते हैं हाउ साइंस इज अंडरस्टूड टुडे। हाउ साइंस इज अंडरस्टूड टुडे। अब लिखो दो नेचुरल साइंसेस, हम ये कहने कि आज साइंस कैसे समझा जा रहा है, हाउ साइंस इज अंडरस्टूड टुडे। तो साइंस तो पहले क्या था, फिलॉसफी, माइथोलॉजी को चेंज किया, लॉजिक पे आए, फिर रिलीजन में आ गया, फिर साइंस, फिर हम प्रूफ मांगने लग गए कि बताओ भगवान ने ऐसा कहा, फिर प्रूफ मांगते मांगते साइंस की थीम्स फिर बदलते चले जाएंगे। तो आज साइंस फॉल्सिफिकेशन है। फॉल्सिफिकेशन का मतलब है डाउट, ये फिलॉसफी ऑफ साइंस और डाउट करना, क्योंकि साइंस का मतलब ही है डाउट, स्केप्टिसिज्म। हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम लोग लिंक करेंगे, ठीक है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट्स आवर सिटीजन्स द फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। Why this scientific temper is essential to fight the superstitions। तो ऐसे ब्रॉड थीम आते आते यूपीएससी में जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो फिर एकदम इंडिया तक नैरो डाउन करिए, और एक पॉलिसी मेकर के पर्सपेक्टिव से फिर लिख के वहां पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमें साइंस को फ्लरिश करना है प्रोग्रेस के लिए। साइंस को फ्लरिश करने के लिए एक एनवायरनमेंट लगता है, क्या है वो एनवायरनमेंट? साइंस कहाँ फ्लरिश हो सकता है? डेमोक्रेसी में। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अल्टीमेटली आप केवल इतने तक नहीं आएंगे, डाउटर इज द मैन ऑफ साइंस, बट
How will you allow doubters? So democracy is important. Open society and its enemies. Is that clear? तो डेमोक्रेसी, तो देश में डेमोक्रेसी, यही तो एटीट्यूड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. वहां से लिंक कर लो. इंसान सेंटेंस है वो आधा है, इसके आगे आप क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या देखते हैं, उसके अंदर आप क्या देखते हैं, यही फिलॉसफी है. तो मैं तो यही, आई एम टेकिंग द मैसेज, डाउटर इज अ मैन ऑफ साइंस, science is linked with progress, and therefore we have to, a state has to create an environment which leads to the growth of science. This requires an open society, this requires democracy, and this is what the essence of Indian Constitution. We want to go for modernization. That's why we created an open society. Article 19 you can talk, Article 21 you can talk, good life, right to education you can talk. Since the time of Pandit Nehru till present time, the government is focusing on promotion of science, and it's not that just promotion of science, it is a promotion, there has to be a culture of science, the culture of superstition. But फिर हम लोग कहेंगे at the same time science should not become ideology. Science itself, sometimes fighting against science, fighting against totalitarianism, science itself became totalitarian, perpetuation of totalitarianism. Who says that science has become, science is perpetuating totalitarian? Scholars of critical school. Because when science becomes just a technology and it has been monopolized by capitalism, and if you are just promoting science based on the demands of industry, then science becomes totalitarian. तो ये प्रॉब्लम है साइंस की आज, कि साइंस इज प्रमोटिंग इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, साइंस नीड्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग. तो इसमें कौन से जीएस की जरूरत है? जीएस वाले कूद भी जाएं, मर भी जाएं तो भी क्या बता पाएंगे? इसमें पॉलिटिकल साइंस की जरूरत है, और फिलॉसफी की भी नहीं, क्योंकि फिलॉसफी वाले वेग है. पॉलिटिकल साइंस से आप पॉलिसी साइंस में आते हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब, और आराम से यू कैन राइट अ वेरी नाइस ऐसे. ठीक है, हम तो कह रहे हैं साइंस पे लिखना, हर इंसान वुमेन पे लिखता रहता है ना. साइंस का लिखना, आई विल गिव यू द पॉइंट्स, यू विल, मतलब एक्सेप्शनल ही अच्छा हो जाएगा वो ऐसे. तो अब नेक्स्ट क्या, कहाँ पहुंचे हम? हाउ साइंस इज अंडरस्टूड टुडे. देखो राइट, दो एट, ऐसे लिखो, दो एट प्रेजेंट व्हेन. अब ये हम अपनी ओपिनियन दे, हम कैसे समझते हैं, ऐसे में अपना पर्सपेक्टिव लाना बार बार जरूरी है. ठीक है, तो दो एट प्रेजेंट when we talk about science, the first thing that comes to our mind is what? Natural sciences. ठीक है, लिखो, in fact today even natural sciences are not able to catch the imagination, because science has been reduced to what?
टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब लिखो टेक्नोलॉजी इज नॉट द एसेंस ऑफ साइंस, it is just one of the product of science. Right? The universe of science is wider, deeper. Right? Science is more than technology, comma. Science is more than natural sciences. What is science? क्या है फिर साइंस आपकी नजर में? अपनी नजर में बताएं, अपना पर्सपेक्टिव बताएं. व्हाट? क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, तो साइंस इज नॉट नेचुरल साइंस ओनली, साइंस इज नॉट. लिखो द एसेंस, ऐसे लिखो द एसेंस ऑफ साइंस इज क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट डीपर, segregate the myths from knowledge. The myths from knowledge and develop the right perspective. लिखो this value of science which was the feature of Renaissance which led to enlightenment needs to be positioned again. Right? Perhaps the essence of science is the only way to save this world from the many evils which we are facing today. Right? Next paragraph, right? Though it appears very contradictory, yet it will reflect our blinkered vision, our very narrow vision. If we ignore that how science has been misused in present times. ब्लिंकर्ड विजन, अगर हम साइंस की पढ़ाई करते जाएं और इस पर ध्यान न दें, दैट हाउ साइंस हैज बीन मिसयूज्ड इन प्रेजेंट टाइम्स. एग्जाम्पल्स लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिटलर हैज मिसयूज्ड
Darwin's theory of survival of the fittest to justify his racial propaganda. Next, today science is being monopolized by the corporate class to the extent that there are not only threats to privacy of individuals, but to national security. Next, science is being misused for selective determination of the child, comma. It is being misused in the form of chemical and biological weapons. Right? The way science has been misused is that our rationality has got reduced to instrumental rationality. Instrumental rationality. Okay. Hence, the original spirit of science is needed. ठीक है, तो अब लिखो once the man of doubts, men who doubted kindled the flame of knowledge to begin with. We can talk about Copernicus, who faced the anger of the church and was imprisoned throughout life for challenging the geocentric view of universe. Next, the another man of science who doubted the wisdom of Aristotle, which was based on assumptions, was Galileo,
who experimented with the two balls to counter Aristotelian assumption about the lighter and the heavier bodies. The list is long of the people who challenged the conventional morality, suffered for exposing the ignorance, yet were brave enough to protect the spirit of science. ठीक है, अब हम इंडियन पे आ जाते हैं. ठीक है, अब लिखो we should recognize the vision of the makers of Indian Constitution who believed that the only path for revival of this great civilization is through modernization. Through modernization. It is one of the fundamental duties of Indian citizens to develop inverted commas scientific temper. Full stop, right? Article 17, which abolishes untouchability, is a great leap forward and an act of courage to challenge a society based on superstitions. Next, despite being a poor country with limited resources, since beginning, all governments have taken steps to promote culture of science. In 21st century,
progress in STEM education has become the determinant of power. With limited resources, Indian scientists have done wonders. For example, Chandrayaan, ठीक है, लैंडिंग ऑन दैट सरफेस एंड ऑल, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब लिखो राइट, राइट, इट इज essential that government should promote not only science but culture of science. Right. It is also essential that knowledge and development of science should not be monopolized by corporates, मतलब वो तो फिर एक ही चीज के अनुसार चले जाएंगे, ठीक है। इट इज एसेंशियल दैट एनी पॉलिसी फॉर development of science should be inclusive. किस सेंस में इंक्लूसिव? बेनिफिट्स के सेंस में इंक्लूसिव लिखो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट but also in terms of benefits. इसमें गवर्नमेंट के कुछ वुमेन वुमेन वाले प्लान ये सब थोड़े से लिख देते हैं, फिर इसको हम लास्ट करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं राइट, टू conclude we can say that the men of doubt, the men raising doubt, have been the men of science. Raising the doubts have been the men of science. Science has been progressive. Because it has challenged the superstition, फिर लास्ट में लिखते हैं we have to be careful that science does not turn into dogma. साइंस भी डॉगमेटिक नहीं होनी चाहिए, साइंस भी ओपन एंडेड है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ साइंस बताऊंगी, तो उसमें फेयर बैंड ये सारे लोग हैं जो कहते हैं साइंस को भी आप ओपन एंडेड रखिए, डॉगमेटिक नहीं होनी चाहिए साइंस। यही नहीं है कि हर चीज का वेरिफिकेशन ही किया जाए या फॉल्सिफिकेशन ही किया जाए, तो साइंस शुड नॉट बी डॉगमेटिक। आप ये लिखिए कि हम उसको केयर करें। फिर साइंस
देखो, science should not be limited for the privileged few, and above all, privileged few, and science should not be limited for privileged few, and above all, we need an ecosystem conducive for the growth of science and substantive democracy, where there is a culture of dissent, that is open society, is the first necessary condition. एक लास्ट ऐसे लिखो, इंडिया विल टेक a step in the journey of science based on Indian values. Indian values क्या है? Point number 1. Unlike Europeans, which used science for domination, ठीक है, India to use science for benefit of humanity. सबका साथ सबका विकास, ठीक है. फिर इसमें लिखो, दिस इज, ऐसे लिखो, बीइंग टेक्नोलॉजिकली, ऐसे लिखो, बीइंग टेक्नोलॉजिकली one of the most advanced nations among the countries of global south, technology among the countries of global south, India has always taken the interests of global south, be it SARC satellite, or COVID vaccines, telemedicine, blue economy. ठीक है, हम साइंस को डोमिनेशन के लिए ना ही यूज करें, डेमोक्रेटाइज रखें, क्रिएट एन एनवायरनमेंट. तुमको लग रहा है आ गया समझ में? साइंस पे लिख सकते हैं आप अभी. अच्छे, लेकिन अभी हमने टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इतना फोकस नहीं किया. हाँ, इसमें कहाँ है वो, ये है क्या? वो कहाँ गया है उसमें? अब इस ऐसे के बाद हम लोग कुछ और जो PYQs है साइंस के, उसको थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे. वो वाला था ना, PDF है ना. तो इन द नेक्स्ट क्लास, जैसे है ना, नॉलेज पे हमेशा आता है, नॉलेज इज गुड. तो कभी कभी आप नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉलेज इज गुड,
मतलब समटाइम्स इट इज बिलीव दैट इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ठीक है, जब भी हमने पहले, आई जस्ट थॉट आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट कि जब हम साइंस पे लिख रहे हैं, नॉलेज पे लिख रहे हैं, तो हम अपोजिट थिंकिंग के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ये कहाँ से आता है? इग्नोरेंस इज अ ब्लिस भी शायद करके आई थिंक ऐसे में आया हुआ है या कुछ ऐसा भी आता है। तो ये देयर आर सर्टेन पोएम्स विच कैन टॉक अबाउट नॉलेज, मतलब अपोजिट सेंस में भी हम देख सकते हैं। तो जैसे एरिस्टोटल का जो फिजिक्स है, ये पहला बुक है, ठीक है, सिस्टमेटिकली, टोलेमी की ज्योग्राफी। So who are these important persons? Did the scientific revolution, empirical science, man like Galileo, ये और ये पूरा जो है ना, ये सब एक ऐसे पर बेस्ड ऐसे है ये। Galileo's legacy, conflict with the church, this is trial of Galileo, डेविड ह्यूम का कॉन्सेप्ट, एंड दिस पर्सन डेकार्ट, उसकी खुद की भी फिलॉसफी पे, उसके खुद के स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, तो ये रैशनलिस्ट ट्रेडिशन इन साइंस है, कॉजिटो एर्गो सम। तो जो डेविड ह्यूम है, डेविड ह्यूम एम्पेरिसिस्ट है, तो डेविड ह्यूम कह रहा है कि हम भगवान देख नहीं रहे, तो हम नहीं मानते। ठीक है, व्हाट इज सीइंग, बट ये he is supposed to be a philosopher who has logically established God. Fine. तो इसने ये बताया कि हम साइंस फिर डिफरेंट डायरेक्शन में गई, कि एम्पेरिसिज्म से साइंस फिर रैशनलिज्म में चली गई, कि ये इतना इनफ नहीं है कि चीजें हम देख रहे हैं वही सच है। तो साइंस के भी ट्रेडिशंस ऐसे डेवलप होते हैं। इस आंसर में डेकार्ट, डेकार्ट का ही है मेथड ऑफ डाउट, और ह्यूम का था सर्टेनिटी। तो डेविड ह्यूम से डेवलप किया, बेंथम ने अपना फेलिसिफिक कैलकुलस, सर्टेनिटी वाला। तो ये वाला जो है ना डाउट वाली, ये गैलीलियो, कोपरनिकस, डेकार्ट, इसका मेथड है डाउट का, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। माइंड बॉडी, फिर धीरे धीरे ये सब चीजों से आइंस्टीन की रिलेटिविटी आ जा रही है, कि गॉड, और उसको आप इतना Karl Popper's contribution of falsification, right? Concept of paradigms. ये है Paul Feyerabend. So Paul Feyerabend says that we should not be very specific about the methods, open-ended. तो अभी philosophy and science के differences are getting dissolved against a universal scientific. Science itself cannot, मतलब when I'm saying against a universal scientific method, but science cannot itself be dogmatic. Science also needs, science progresses through doubts. Abhi science is turning into ideology. Why democracy is important. Science is subversive. Means science revolutionize कर देती है. Revolutions मतलब साइंस ने जो इस्टेब्लिश ट्रेडिशन है या अथॉरिटी है उनको चैलेंज किया, चर्च को चैलेंज कर दिया ना। तो साइंस इज अ कल्चर ऑफ डाउट, ये भी शायद आया था, एंड रिलीजन इज अ कल्चर ऑफ फेथ समथिंग। तो साइंस डाउट है, साइंस गोज फॉर सबवर्जन, ये शायद ये क्वेश्चन आया था। ये रिचर्ड फेनमैन है, ही राइट्स लॉट ऑफ एसेज ऑन साइंस। तो ये यूपीएससी में आया था, रिलीजन इज अ कल्चर ऑफ फेथ एंड साइंस इज अ कल्चर ऑफ डाउट। तो वो भी क्वेश्चन, और ये जो दूसरा अभी आया लगभग एक ही चीज है ना। तो वो इसमें कोई बहुत ऐसे साइंस पढ़ने की वो जरूरत नहीं है। तो अब ये क्रिटिकल स्कूल ऑफ साइंस, इसके हम
फेमिनिस्ट का व्यू है कि आप जेंडर्ड व्यू दे रहे हैं साइंस का, तो स्टेम एजुकेशन में भी वुमेन कम है, और आप जेंडर्ड दे रहे हैं, बाईपोलर अपोजिट्स के सेंस में दे रहे हैं। पोस्ट कॉलोनियल लोगों ने बताया कि साइंस के थ्रू क्या किया गया, कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने के, इसलिए साइंस के नाम पे नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल कि साइंस को कहने से साइंस नहीं हो जा रहा है। तो साइंस और ये सब साइंस है। तो ये सब एक दो पोयम साइंस पे आई थिंक आएगा तो यू कैन राइट गुड ऐसे, है ना। जैसे एक पोयम है, द पाथ ऑफ साइंस इज नेवर स्ट्रेट, इट टर्न्स, इट ट्विस्ट टर्न्स, इट चैलेंजेस फेट, बट इन ईच ट्रायल एंड इन ईच टेस्ट वी इंच क्लोजर टू द फाइनल क्वेस्ट। ओके, तो मॉडर्न सोसाइटी, एआई पे काफी कुछ चल रहा है, ये इसमें मिल जाएगा। मतलब व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, वो तो आप लोगों को वैसे भी पता होंगे। विज्ञान प्रसार, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग टू प्रमोट वुमेन इन साइंस, इंक्लूसिवनेस, बजट, फाइन। तो ये this will get, but in the next class I will discuss these philosophies, we'll discuss one or two more, वरना साइंस पर एक वो रहेगा टेस्ट। आपको लगता है इतना नॉलेज इनफ है इससे, तो आप उतने पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चीजों से और सब्सटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो शुड बी एंड नाउ, फाइन, चलिए, थैंक यू।